हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैफ़े मोका स्टारबक्स सीसीडी स्टाइल, बेसिकली अ कैफ़े स्टाइल चॉकलेटी कॉफ़ी। सो हियर आई हैव माय ब्लेंडर एंड इसमें मैं डालने जा रही हूँ आइस क्यूब्स। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12, डिपेंड्स ऑन हाउ कोल्ड you want it to be. Then I'm going to add half a teaspoon of coffee powder. I am using Nescafe coffee. You can use any. There are so many available in the market. Then I'm gonna add cocoa powder. I'm gonna eyeball this. आप ड्रिंकिंग चॉकलेट भी डाल सकते हो, बट इट डजेंट हैव दैट डेकोरेंट चॉकलेट फ्लेवर. तो आप किसी भी कैफ़े में जाओगे, दे विल मेक श्योर दैट दे पुट cocoa powder into your cafe mocha. The next ingredient is chini, sugar. This totally depends on your taste. Since I'm using plain cocoa powder, it's bitter. So I'm adding 3 teaspoons. Now, here comes the trick. Here I have hamara doodh milk. I'm gonna add a little bit first, like the half of it, and I'm gonna blend it by pulsing it so that my ice cracks एंड अच्छे से हर चीज़ मिक्स होना शुरू हो जाए. गिव मी अ मोमेंट. तो गाइस, अब मैं इसको पल्स कर करके चलाऊंगी ताकि मेरी आइस क्रश एंड सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं. इसको 3-4 बार पल्स कर लिया एंड दिस इज़ हाउ माई मिक्सचर लुक्स. Whole ice is crushed. It's nice and frothy. I'm gonna add my remaining milk and our frappuccino, our cafe mocha frappe is ready. So guys, मेरी frappuccino ready हो गई है. It's frothy, nice. This ratio is good for one people if you are drinking in a big glass, but I'm gonna divide it in two. Can you see it? How chocolatey and how frothy. अगर आपके पास whipped cream, ice cream, kuch bhi hai, you can serve it. But I'm going to drink it as it is. That's how decadent and chocolatey it is. Do like, share and subscribe to our channel and let me know कि आपको ये कैसी लगी.